गुड मॉर्निंग फ्रॉम नुब्रा वैली। एज यू गाइस नो हम कल रात को डिस्किट पहुंच गए, रात नहीं शाम को डिस्किट पहुंच गए थे। वी स्टेड हियर और आज हमारा प्लान है विल बी गोइंग टू हुंडर एंड पेंगोंग लेक। पेंगोंग लेक एज यू गाइस नो is the famous lake of Ladakh. Alright, I'll give you guys the details later. But for now, yes, what's up guys? This is Manjil. Welcome to my channel. I hope you guys are doing great. So abhi I'm in the street of Diskit. I was looking for a place to have my breakfast. Lekin come on, Ladakh sleeps really early and gets up really late. That is for sure. मतलब कुछ खुला ही नहीं है, देख सकते हो कुछ खुला ही नहीं है. And the view. Let's not talk about the view, man. Come on. Mountains. Covered with mountains everywhere. 360 view. You can see mountains. Here to have my breakfast. And then more Nepali mama sanga bol rahe the. I was talking to my mother in Nepali. At first I was talking to them in Hindi and then and they were like, "You to Ladakhi jasto cha Nepali bol rahe the." Found out they are from Sikkim. Yeah. And this is mutton's thukpa. This is the first time I'm trying mutton's thukpa. मटन को त खाएकै थिइनँ कि मैले थुक्पा कहिले पनि, त्यही त यहाँ चाहिँ पाइँदो रहेछ, मैले खाएको चाहिँ थिएँ. द नुडल इज अल्सो भेरी डिफ्रेन्ट. यहाँ चाहिँ कति भयो आउनुभएको तपाईँहरू? हामीहरू हजुर यहाँ गयो म 12 साल यहीँ बस्नुहुन्छ? म नेपालको होइन, म सिलिगुडीको चाहिँ. त्यही त बोलेको आन्सरमा थाहा भयो. म चाहिँ रावङलाको. कता हो त्यो चाहिँ? ए सिक्किमतिर? सिलिगुडी रावङला थाहा छैन? ए रावङला सिक्किममा. हजुर 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 त्यता हो. बोलेकोमा थाहा भयो, नेपालको त होइन होला. होइन नेपालको त होइन, इन्डियाकै हो. Okay, let's start our ride. Just look at this beauty. Early morning में उठा था शायद कितना बजे? 5:30 बजे. And the view was epic. मतलब मैं उठता था ना मुस्तांग में, मुस्तांग तो कुछ है ही नहीं यार. लोअर मुस्तांग को मैं जज कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ दिस. आई हैव नॉट बीन टू अपर मुस्तांग. अपर मुस्तांग शायद इसको कम्पीट कर सकता है बट लोअर इज नोवेयर नियर. ओके पहुँच गए हुंडर और यहाँ से हमें लेना है राइट. ओके वी आर गोइंग टू सैंड ड्यून्स, द फेमस सैंड ड्यून्स ऑफ लद्दाख, हुंडर. लेट्स सी व्हाट द प्लेस हैज टू ऑफर. Okay, we just reached the sand dunes of Hundar, and what's famous in this place is the two-humped camel. They are also known as the Bactrian camel. This is the only place where you'll get to see these kind of camels in India. And the saddest part about these camels are when the first transportation like ye gaadi, sab ye trucks and all, they were introduced, these camels were abandoned by their owner. और फिर ये stray बन गए थे और फिर Animal Department of India probably they kept them, they preserved. There were only 64 remaining और फिर अभी शायद due to breeding and all there are 298 of them remaining. Okay, I have never seen camel. Okay, म आजसम्म गएको थिइनँ, आज तक मैं डेजर्ट में गया भी नहीं हूँ. Man, they are huge. Why are they so big? What is this animal, man? Look at this. People are riding. They look so big. What's up, bro? Oh, bhai. Look at this. Come on, imagine these rare animals being stray in the early time. That is so painful. Let me try touching him. Oh, this is so nice. Whoa. This is what's going to keep them away from cold. It's very thick. This is the main reason how camels survive in this desert without water. The main reason is water is not stored in here, okay? वाटर नहीं होता है यहाँ फैट स्टोर होता है और जब खाना नहीं मिलता है तब ये फैट इनको एनर्जी देती है. दैट इज़ हाउ इट वर्क्स. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग पानी रहता है वहाँ. नहीं भाई, पानी नहीं रहता है, वहाँ फैट रहता है.
So we'll have some pictures over here. This is the place. These are the camels. You can ride on desert. I don't think I'll be doing it. I'm thinking about it. I don't want to. I feel like I'll torture them. मुझे लगता है this is animal torture, you know, climbing on the, riding on the animals. But this is what I feel. Everyone have their own perspective. So I'm not going to do it. I think my friends are going to do it. So let's take some time. Okay, we are done with the sand dunes. Okay, this is the last view of the majestic sand dunes. यहाँ से हमें नीचे जाना है ऐसे, वहाँ से ऐसे जाना है, and straight there is a road. जहाँ से हम कल आए थे. This is the place that divides Diskit and Pangong. यहीं से ले भी जा सकते हैं. ले is 138, Pangong is 130. हम लोग आए थे इस तरफ से. Let's go, let's go. हम सच में सही रास्ता जा रहे हैं. What is this? So many water crossings, so many. I think in 5 minutes we have already done like 5. The road is super narrow, man. I mean, it's very small. एक इनोवा और हमारी बाइक उतना ही अटती है, इसलिए ये ऐसा वाला जगह दिया है, just in case for the crossing trucks या थोड़ी बड़ी गाड़ी आए तो. But for now this but for now बोल रहा था भाई, साइड का तो देखा ही मैंने. Oh my God, look on my left. ऊपर से एक पत्थर आके थोड़ा भी टच किया ना, सीधा नीचे. बाइक इतना दिन मैंने ये बाइक चलाया, लेकिन जो मज़ा लद्दाख में आ रहा है ना, क्या ही बोलूं. वी आर गोइंग अप हिल अगेन. दिस इज गुड. दिस इज सो गुड. आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस. और मैं सही रास्ता के चक्कर में गलत तरफ आ गया. लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो. यस, रास्ता तो ना पैंगोंग तक बहुत ही बिगड़ा हुआ है यार. आई मीन देख सकते हो, ये छोटा पैच है, थोड़ा अच्छा, वरना सब वैसा ही. एंड ऑल ऑफ अ सडन ये रास्ता आ गया, फिर पूरी तरह से बिगड़ गया है ये. यू कैन सी ये सब ड्रम रखा है इधर टू कीप द सोइल इंटैक्ट, ताकि वो गिरे ना. और दिस प्लेस इज ऑल्सो नोन फॉर शूटिंग स्टोन्स, क्योंकि ऊपर से स्टोन्स गिरते हैं. अभी तो गिरा नहीं है. आई मीन सच्ची में यार, वी आर गोइंग इनटू द माउंटेन्स. लाइक हाउ आर दीज रोड्स कंस्ट्रक्टेड? कैसे बनाया ये रास्ता को? जस्ट लुक एट दिस. वी आर गोइंग जस्ट इनसाइड द माउंटेन. ओ भाई, इमेजिन आप रात को ट्रैवल कर रहे हो, कितना डरावना है ये रास्ता. ये देखो, अरे यार, लुक ऑन माय राइट एंड लुक एट द रोड आई एम राइडिंग. Okay, this is the water crossing we'll be doing. The car does it very easily. मतलब वो देखो, कार को मतलब होता नहीं है. So since I have the bigger bike, I'll take the privilege of going first. This is how the place looks like. हम तो भाई खड़ा होके जाएंगे. Yes! अरे कुछ टफ नहीं था, बस पानी का ऊपर से ही तो जाना है. पता नहीं आदमी लोग कितना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना देते हैं. मुझे बस एक ही चीज़ टफ लग रहा है लद्दाख में, भूख बहुत लगता है मुझे. बस वही है. वैसा छोटा मोटा वाटर क्रॉसिंग तो आते रहता है ये ऑन द वे टू
वो छोटा तो बोल दिया भाई, अंडर एस्टिमेट नहीं करना था। Oh, on the way to Pangong Lake. Huh. नाम क्या है? साइले। हाँ? साइले। साइले? हाँ। कहाँ है घर? उधर। किधर? उधर। किधर? उधर किधर? इधर? कहाँ गया? ओए, भाग। Okay, after that drone shot we came downhill, and I think this is the river from the Pangong Lake because it's so clean. The road is something like this. It's very beautiful, it's very scenic, it's so joyful to be riding on this kind of road. Just look on my right side, there is a river. Left there is a very big mountain, right as well, in front as well. Finally I can see the lake there. Oh bhai, finally, let's go, we still have a lot to go, but still I can see the destination. There we have it, the lake. Oh look at bhai, ये क्या है मेरा हाथ? Oh wow, whoa, this is so beautiful. Was the ride worth it? 100%. I have never seen army's ship. This is also the first time. I mean, this is a lifetime experience, man. This is the first time I'm coming here, and I think I'll be coming here again.